हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अबाउट द एनालिटिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस एंड बाय द मिलने थॉम्सन मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z डू द फंक्शन w डिफाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। दैट इज, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है w, ये z की किन वैल्यूज के लिए एनालिटिक नहीं होगा। और हमारे जो फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक u कॉस v प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक u साइन v। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको, यदि मैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकाल लूँ और देखूँ कि जो हमारा डी डब्ल्यू बाई डी जेड जेड की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, तो वो पॉइंट हमें मिल जाएंगे या जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डी जेड बाई डी डब्ल्यू। तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज डेल जेड बाई डेल यू, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मुझे z का w के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैं z का u के रेस्पेक्ट पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो ये वैल्यू सेम रहती हैं। तो इफ़ वी पार्शियली डिफ्रेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू u, सो वी गेट cos हाइपरबोलिक u cos v प्लस आई साइन हाइपरबोलिक u साइन v। तो हमें ये इक्वेशन डी जेड बाई डी डब्ल्यू मिली, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। अब यहाँ से जो हमारा z है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक u कॉस v प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक u साइन v का होल ऑफ स्क्वायर। So this can be written as sin hyperbolic square u cos स्क्वायर v, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u साइन स्क्वायर v प्लस 2 आई साइन हाइपरबोलिक u cos हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक cos v इंटू साइन v। तो यहाँ से जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u है इसको cos में ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स cos हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस 1 cos स्क्वायर v माइनस, इसको साइन में ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इंटू साइन स्क्वायर v प्लस अगेन 2i साइन हाइपरबोलिक u कॉस हाइपरबोलिक u साइन v एंड कॉस v। इसको यदि ओपन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u कॉस स्क्वायर v माइनस कॉस स्क्वायर v माइनस साइन स्क्वायर v माइनस साइन स्क्वायर v इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस 2i साइन हाइपरबोलिक u कॉस हाइपरबोलिक u साइन v cos v। So here minus cos square v minus sin square v becomes 1. So and this is this and this minus becomes plus I square. So this and this becomes cos hyperbolic u cos v प्लस आई साइन हाइपरबोलिक u साइन v
whole half square minus 1. So this is by the equation first. By equation first, we put dz by dw at place of this. So this becomes dz by dw whole half square minus 1 is equal to z square लेकर चल रहे थे, which implies dz by dw whole half square is equal to z square plus 1, or dz by dw is equal to plus minus square root z square plus 1. That is dw by dz is equal to plus minus 1 upon square root z square plus 1. So here we see that this dw by dz is not defined at where z square plus 1 is 0. Hence w ceases to analytic if z square plus 1 is equal to 0. That is z square is equal to minus 1. That is z square is equal to I square. So z is equal to प्लस माइनस आई. तो यहाँ पर z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के लिए जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेकेंड. सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन. तो हमारे पास u गिवन है, दैट इज रियल पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर गिवन है, और हमें सबसे पहले तो इसे हार्मोनिक चेक करना है. देन हमको इसके रेस्पेक्ट में जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है उसे फाइंड आउट करना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. नाउ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सो दैट u इज़ हार्मोनिक. तो हार्मोनिक के लिए क्या होता है कि हार्मोनिक के लिए हम लोग ये दिखाते हैं कि हमारा जो फंक्शन u है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सो वी partially differentiate u with respect to x and y. So del u by del x is equal to, if we differentiate partially, so this becomes 3x square minus 3y square, and again differentiate, so this becomes delta 2u by del x2 is equal to 6x. Again differentiate partially with respect to y, so del u by del y is equal to, this becomes minus 6xy, and again differentiate, so delta 2u by del y2 is equal to minus 6x. Now adding these equations, so delta 2u by del x2 plus delta 2u by del y2 is equal to 6x minus 6x, which is 0. Hence u is a harmonic function. Again we have to find out the function fz where u is given, that x cube minus 3xy square. Since we know that f dash z is equal to del u by del x plus I del v by del x, or by Cauchy-Riemann equation
del u by del x plus I del v by del x is equal to minus del u by del y. So this becomes f dash z is equal to del u by del x minus I del u by del y. Putting these values of del u by del x and del u by del y from above equations, so we get f dash z is equal to 3x square minus 3y square into 3x square minus 3y square plus I del u by del y is minus 6xy, so minus minus plus, and this becomes 6xy. After solving this, we get 3 can be taken common out, so this becomes x square minus y square plus 2ixy. This can be written as 3x square plus I square y square plus 2ixy. So this can be written as 3x plus iy whole half square, which can be written as 3z square. So f dash z is equal to 3z square. So integrating, we get fz is equal to z cube plus c, where c is constant. So this fz is a function, analytic function with respect to real part u is equal to x cube minus 3xy. Now next question is, if u is equal to x minus 1 whole cube minus 3xy square plus 3y square, then determine v so that u plus iv is a regular function of x plus iy. Here we have to show that, here we have to find out v. So it is given that u is equal to x minus 1 whole cube minus 3xy square plus 3y square. So we differentiate partially with respect to x and y. So we get del u by del x is equal to 3x minus 1 whole half square minus 3y square. Again differentiate partially with respect to y. So this we have del u by del y is equal to minus 6xy plus 6y. Here v is a function of x and y. So dv is equal to del v by del x dx plus del v by del y dy. By Cauchy-Riemann equation, we can put minus del u by del y at place of del v by del x. So minus del u by del y dx plus del u by del x dy by CR equation. Putting the values of del u by del y from above, we get 6xy minus 6y dx plus 3x minus 1 whole half square minus 3y square dy. So dv is this. Open this, so we get 6xy dx minus 6y dx plus, after solving it, we get 3 minus 3y square
dy plus 3x square minus 6x dy. So this can be written as 6xy dx, this whole and this. So we can write this as 6x minus 6y dx plus 3x square minus 6x dy plus 3 minus 3y square dy. So we can write this as d of 3x square minus 6x of a y. If we differentiate this, we get this. So d plus 3 minus 3y square dy. This is dv. After integrating, we get v is equal to, so this becomes 3x square minus 6x y plus this is 3y minus y cube plus c, where c is constant. Hence this is the required v. Now next question is u plus v is equal to 2 sin 2x whole by e to the power 2y plus e to the power minus 2y minus 2 cos 2x. Then we have to find z, fz. Here it is given this is the sum of u plus v. So we cannot apply any method to find fz. So first of all we write fz is equal to u plus iv. This can be written as 1 plus I. If we multiplied 1 plus I in both sides, so we get 1 plus I fz is equal to 1 plus I u plus iv. So we get 1 plus I fz is equal to u plus iv plus iu minus v. This can be written as u minus v plus I u plus v. So 1 plus I fz is equal to u minus v plus I u plus v. Here if we consider 1 plus I fz is a capital Fz and u minus v as a capital U and u plus v is capital V. So we get fz is equal to u plus iv, and here we know that v is equal to u plus v is equal to 2 sin 2x whole by e to the power 2y plus e to the power minus 2y minus 2 cos 2x. So now we have to find u, capital U, by Milne-Thomson method. So by Milne-Thomson method, if v is given, so we find out psi 1 x comma y and psi 2 x comma y such that psi 1 x comma y is equal to vy.
this is capital. So capital Vy is equal to, Vy means partially differentiation with respect to y. So differentiate this with respect to y, we get, this is, first of all solve this and simplify. So we get, if we divide this by 2 in both denominator and numerator, so we get sine 2x whole by e to the power 2y plus e to the power minus 2y whole by 2 minus cos 2x. And since we know that e to the power 2y plus e to the power minus 2y is cos hyperbolic 2y and minus cos 2x. Now we easily differentiate v with respect to y. So we get Vy is equal to minus sine 2x. If we differentiate partially with respect to y, so this is whole of a square. So this is cos hyperbolic 2y minus cos 2x whole of a square, and again differentiate this with respect to y, so this becomes sine hyperbolic 2y, and again with respect to 2y, so this is 2. So we get psi 1 x comma y is equal to Vy. Again psi 2 x comma y, so psi 2 x comma y is equal to Vx, that is partially differentiate v with respect to x. Here this is by numerator upon denominator, so differentiate it, we get 2 cos hyperbolic 2y minus cos 2x into cos 2x minus sin 2x into sin 2x into 2 whole by cos hyperbolic 2y minus cos 2x whole of square. So after simplifying, we get psi 2 x comma y is equal to 2 cos hyperbolic 2y cos 2x minus 2 whole by cos hyperbolic 2y minus cos 2x whole of square. So this is your psi 2x comma y, and we have psi 1 x comma y is, psi 1 x comma y is your minus sine 2x, that is minus 2 sine 2x sine hyperbolic 2y whole by this cos hyperbolic 2y minus cos 2x whole of square. So this we have psi 2 and psi 1. Now by Milne-Thomson method, Fz is equal to, here f is capital, Fz is equal to integration psi 1 z comma 0 plus I psi 2 z comma 0 dz. So if we put x is equal to z and y is equal to 0 in psi 1, so we get, this becomes 0, so this is 0 plus I put x is equal to z and y is equal to 0, so we get psi 2, that is 2 cos, this becomes cos hyperbolic into 0 cos 2z minus 2 whole by, again this becomes 0, so 1 minus cos 2z
whole of square. So this is dz. This can be written as I, and this is 1, so 2 cos 2z. If we take minus 2 common, so we get 1 minus cos 2z whole by 1 minus cos 2z whole of square dz. So this can be written as minus 2i integration 1 upon 1 minus cos 2z dz. This can be written as minus 2i into integration cos 2z is 1 minus cos 2z is 1 upon 2 sine square z dz. So this becomes 2 and 2 cancel out, so minus I integration cosec square z dz, and this cosec square z is minus cot z, so this is minus I cot minus cot z, so this is plus cot z plus c. So fz is equal to this, but we have fz is equal to 1 plus I fz from above. So this is I cot z plus c. Now divide by 1 plus I, so fz is equal to I upon 1 plus I cot z plus c upon 1 plus I. Solving this, we get fz is equal to 1 plus I by 2 cot z, and this is a constant, so put d at the place of c 1 plus I. So your fz is equal to 1 plus I cot z plus d. So this is the required analytic function fz.